Welcome to Vyapaar Jagat Talk Show. This is Darshana Thakkar, Fempreneur Saturday series. This fourth Saturday on the Fempreneur physical event happening on 19th March 2023 at Ahmedabad. I welcome all the panelists over here on the Saturday Talk Show, Power Couples Talk Show today. And I welcome Mitti Limache over here to moderate the panel. Fempreneur Talk Show is going to happen very soon. So now there is limited time to nominate yourself. I recommend every viewers and everyone who is watching this show to register, nominate yourself for the Fempreneur Award. It will be a very good recognition for your career journey. And today we have Mitti Limachia. Mitti is a learning and development professional. She is training the youth, the people who are ready to join the workforce as an employee or start the entrepreneurship journey, the professional etiquette, the personal etiquette, behavioral aspects, soft skill, and everything. Mitti can better introduce herself. Mitti, it is over to you now. Take the charge. Thank you so much, Darshana. Thank you. Hello, everyone. Welcome to the Fempreneur live show today. I'll quickly take a few seconds just to introduce myself. So Darshana has already introduced most part of what I do, but I'd like to just talk about my passion and my vision and mission is to create impact in people's life. And I would like to do that by enabling people in their professional, personal career and development. And which is why I founded a company named Enabling Lives, which is focused towards developmental requirement. And that brings me to actually one of our or the speaker of today's conversation, because we're talking about enabling people and development of people. And the speaker we have today is really someone who's invested half of her life in the development of specially able children. She Wow, has, great. yeah, she has been in the system of services for the past almost 20 years or 27 years or even more than that. You won't believe that she's a mother of 25-year-old kid. She's a founder of an NGO called Current Foundation and provides her services into life skills, soft skills, and a lot. So I'll welcome you, Mrs. Rakhi Verma, for the conversation today. Thank you so much for taking time and connecting with us today to share your experiences. Thank you, Ritu. Thank you so much for introducing me. As Ritu said, I'm Rakhi Verma, co-founder of Current Foundation. And basically, I am into teaching profession since 27 years. And at that time, I was teaching neurotypical children. But sudden of something happened in my life, some changes. I got a gift from a God, and I changed my vision. I changed my motto, and I started teaching children with special needs. So this is how I started my journey with them. It's for around 24 to 25 years. Oh. And I'm also a mother of a 25-year-old specially able child, Karan. So he's the motivation behind the Current Foundation. That is so brilliant. That is so brilliant, Rakhi ji. Thank you so much for sharing your story. Do you want to probably just talk a little bit about what really inspired you to expand yourself beyond Karan? Yes. So what was that motivation? What triggered you that really got into that, okay, I just want to do this for the society now? Yes. Actually, as I said, I was into teaching profession as a private tutor only, and I had around 40 to 50 students from all the different boards. But as I was doing working as a private tutor, so managing these much children one-to-one or in a small groups was a whole day process, right? Mm-hmm. But when Karan came into my life, when he was around 6 or 7, he met in an accident. He fell down from a second floor. And after that, the challenges, began for me, and my life, changed to 360 degrees. उसको पढ़ाते पढ़ाते जब छोटी-छोटी बातों में difficulties face करने लगी, I tried to take help from people so that, they can contribute something in his teaching, in his academics, so that the load becomes little. Because after this accident, he lost his speech.
and very small things which our mother can only, observe. On diagnosis, nothing was there. But as a mother, I came to know very soon that something is wrong, which in future hindered in his academics and all that, and many small things. So when I tried to took help from others, but I'm not going to, blame anyone, because awareness ही इतनी नहीं थी लोगों में कि कैसे इन डिफिकल्टीज के साथ बच्चों को, या जो स्लो लर्नर्स हैं या थोड़े भी स्पेशली एबल्ड है, उनको किस तरह से टीच किया जाए. सो वो प्रॉब्लम उनके लिए भी एक चैलेंज था. दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड आई वाज नॉट गेटिंग द रिजल्ट. सो वन डे सडन ऑफ आई स्टार्ट एक सोचा कि आज से सब ट्यूशंस बंद, एवरीथिंग बंद, एंड आई विल स्टार्ट डूइंग और कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द स्पेशल नीड पीपल और स्पेशल नीड चिल्ड्रन. और वहां से मैंने अपना विजन चेंज किया कि बाकी बच्चों को तो कोई भी पढ़ा सकता है, करेक्ट. सो दिस इज व्हाट एक सोशल इम्पैक्ट की नहीं, इन बच्चों को मैं ट्रेनिंग दूंगी, पढ़ाऊंगी, एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक कि वो भी एक सोसाइटी का बहुत ही अच्छा एंड पार्ट बन सके, विथ एम्पैथी के साथ लोग उनको एक्सेप्ट कर सके और वापस सोसाइटी में उनको भेज सको. सो दिस वाज द मोटिवेशन बिहाइंड चेंजिंग एवरीथिंग. एंड देन फ्रॉम दैट, उस टाइम इस स्टेज पे भी थे कि वी वर नॉट एबल टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी फॉर द थेरेपीज एंड ऑल दैट. सो I started learning lot of things so that I can, teach him at home, or I can apply the things on him. And this is how my journey started. Gradually, जैसे जैसे करण को ट्रेनिंग देती गई, उसके रिजल्ट्स मिलते गए. So mothers and people, they started having, faith कि इसके बच्चे में इतने changes आ रहे हैं. There is something which she is doing with her child. And then people started approaching me कि आप हमारे बच्चे के साथ भी थोड़ा ये अप्लाई कर दीजिए, थोड़ा इनको भी पढ़ाएं. दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल चाइल्ड. उससे पहले भी बच्चे आते थे व्हेन आई वाज इनटू एकेडमिक, तो बच्चे आते थे, बट एट दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू नो कि समथिंग वाज रॉन्ग. वो समझ में आता था, स्पेशली एबल्ड बच्चे तब भी आते थे, सो लर्नर्स एंड ऑल, बट तब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी. बस इतना पता चलता था कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत है इनके साथ, बट हाउ टू टीच देम. बट बिकॉज ऑफ करण, I learned everything, and then I came to know कि किस तरह से बच्चों को हैंडल करना है, कैसे रहना है. Then I started giving them life skill training, soft skill training, pre-vocational training, more behavior modification. जो भी पेरेंट्स की नीड होती थी वो आके मुझसे शेयर करते थे कि आपको क्या चाहिए. This is what I used to do. And बहुत बड़ी चीज है कि उस टाइम मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी as such, for working with specially abled children. बट जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने अप्लाई किया, एंड द रिजल्ट्स वर गोइंग गुड, एंड पीपल, एक से 2 बच्चे हुए, 3 हुए, 4 हुए. दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड. That's so amazing. Thank you so much. Thank you so much for sharing Thank you. some experience from your whole entire journey. I'm sure जितना सरलता से आपने बताया उतना easy तो था ही नहीं. No, but it was never. It was never. So you explained it so easy, like it was like, it's such a cakewalk. But I'm sure you had your own set of hurdles, challenges. Definitely. That actually leads me, there is a man sitting right next to you. Yes. So I'm very curious to know that what role did Puneetji play in your change of vision that you're talking about? What role did he have to play in your life? Yes. And where you are, how you are. Because आपने अभी जो बताया, you just talked about Karan, you talked about how he inspired you. Yes. But I'm sure there is another man in your life who inspired you also and supported you. So I'm definitely. really interested to know about that. Yes, actually, he's Puneet. So, शुरुआत ऐसी हुई, जैसे मैंने कहा कि इनिशियली व्हेन आई वाज टेकिंग ट्यूशंस, तो ये डिसीजन लेना हम दोनों के लिए बहुत डिफिकल्ट था कि सडन ऑफ आप एक अपना सोर्स ऑफ इनकम बंद करके आप जीरो से चीजें स्टार्ट करते हो. एंड द फर्स्ट ट्यूशन विच आई स्टार्टेड टू टेक, और एक सेशंस देना स्टार्ट किया, दैट वाज 200 रुपीज पर मंथ एक बच्चे से, जो कि आज की थेरेपी से अगर आप कंपेयर करते हो तो स्टार्ट्स फ्रॉम 400, 500 टू प्लस एंड ऑल दैट. सो हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग था, एंड ही सपोर्टेड मी कि ओके, दैट्स ओके, अगर आपको ये स्टार्ट करना है तो आप ये कर सकते हो. ही वॉज नॉट इंक्लूडेड दैट टाइम इन ऑल दीज थिंग्स, बट एटलीस्ट वो येस करना, रोकना नहीं, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, एक फेथ रखना
So I'll switch on to him. He'll explain. You can ask him directly. Yes. Yes. Please. I would really want you to also share, Puniji, that how was it? Like, what did it feel for you when she came to you and she said, okay, I have been an educator throughout my life and I want to now switch and do bigger things for the society, like not just create impact for home, but also go beyond home. So how was your Actually, response? actually, whenever she decides anything, I am always with her, right? Because what I have seen throughout this year is that his passion for studies and educating children is tremendous, right? So when she switched to teaching these special able children, at that time also she was very passionate, and right now also I can say that she is very passionate. And when she entered into this, after that, first thing she did was that she took the degree of a special educator at age she might have 45. Yeah. 45. Yeah. Again started studying. Yeah, Wow. she again started studying and gave exam and got the professional degree, so that nobody can say that she is not a degree holder and how can she do this and that. So I was astonished at this age, how can one study? But she is very much passionate, and even today also say I can say I'm not complaining that she's not giving me time or nothing like that, but her whole time is only for these children. Even at 10 in The night, priority is always that. even at 10 or 11 at night, she's doing something for them only. Maybe preparing their next day work or. See, Right. and one the thing is And that she is so, I can say, I'm not getting the proper word, but she is so mixed up with these children. Na. These children also call her even at 10 or 11 at night. And so I'm always available for them. For them, yeah. so वो कहते they हैं ना, call her, and even कुछ भी हुआ हो पूरे दिन में, they हाँ. will tell her, आज इसने ये किया, So वो nice. किया, मेरे भाई ने मारा, मेरी मम्मी ने मुझे डांटा, so and so. So with professional, it does not happen, usually it does not. But this is the, I'll appreciate about myself is I'm always available for my students, for these children. I'm just a call away for parents. So parents have this faith in me. कि मैम को रात को 12 बजे भी अगर हम अपना बच्चा नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, मैम को कॉल करेंगे तो she will counsel them. So nice. And Yeah. she will. और वो एक कहावत है ना, प्यार दो प्यार लो. सही है. So this is what is happening with her, because she gives a lot of love to these children. She is getting that affection, and these children are so much affectionate ना. आप अगर मिलो उनसे कभी तो आपको पता चले कि they are pure at heart. Right? They are pure at heart. It's because you are also selfless in what you're doing. Yes, That yes, is why you're exactly. receiving. This is what I can appreciate about myself. Yes. उनके साथ the way I listen to them, and the thing is the very minute things they explain me. जो parents के साथ नहीं करते, किसी के साथ नहीं कर सकते. I'm wholesome. They know somebody is there for me. Right. That feeling is even for us also. It's very good feeling. Absolutely. If you have that feeling that somebody is there for me. आज रात को 12 बजे भी 11 बजे भी मैं कॉल कर रही हूँ और डे में अर्ली मॉर्निंग भी कॉल कर रही हूँ. Somebody is there to listen me. Right. आज हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो हम भी फेस करते हैं. Absolutely. मैं एक चीज ऐड ये करना चाहूंगा कि ये बच्चे हैं ना यही चाहते हैं, और सोसाइटी को भी यही करना चाहिए कि इनको टाइम दे. आजकल सब इतना बिजी है, कोई टाइम नहीं देता इन बच्चों को. इवन मतलब आप बोलोगे सिबलिंग्स के पास भी शायद टाइम नहीं होता है. सब अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं, और जब इनको ये अफेक्शन और टाइम मिलता है तो वो अपने आप बच्चे लर्निंग मोड में आ ही जाते हैं. So ultimately, लोगों को, we want people to listen to us. Yes, exactly. That's all is required. Like, you listen to me, and without any judgments. And I think without any yes, be an open book. Being judged, judgment, love judgment हुए बिना एक passion. और प्रॉब्लम ही वहां से शुरू होती है कि एक तो स्पेशली एबल्ड होने की शिफ्ट में एक्सेप्टेंस नहीं होता है सोसाइटी में.
Right. पेरेंट्स को भी मिंगल नहीं किया जाता है, सोशल बॉयकॉट जैसा हो जाता है ऑलमोस्ट। एक तो पेरेंट्स वैसे ही दे आर इनटू वेरी मच इनटू द किड्स थेरेपीज एंड Yeah. बच्चों को And handle- actually, we always focus on kids, but actually parents are also going through Exactly. so This much. is yes. They suffer a lot. मैं बोल रही हूँ ना कि इसके बाद हमारी लाइफ 360 डिग्री पे चेंज हो जाती है, सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बॉयकॉट हो जाते हैं। और शायद मे बी कभी एक फॉर्मल स्माइल के साथ वो आपको एक्सेप्ट तो कर लेंगे, बट आपके बच्चे के साथ एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, द अवेयरनेस इज फॉर द सोसाइटी। हम हमारे बच्चों के लिए भी डोंट एक्सपेक्ट मच, वी विल ट्राई टू मेक देम एक्सेप्ट यू। आप जैसा उनके साथ सोसाइटी बिहेवियर करे, हम हमारे बच्चों को वैसे ही ट्रेन करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये अगर हो रहा है तो दैट्स ओके, एक्सेप्ट इट, राइट। एंड दे नो वेरी वेल। अगर एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि ये बच्चे छोटी छोटी बातों को समझते नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। Yeah. It's not like they understand it. The thing is that they're not able to Express. Yes, I agree. तो we don't expect much from society. हम हमारे ही बच्चों को समझाते हैं कि बेटा जो चीजें जैसी है उसे एक्सेप्ट कीजिए। तो मैं तो सबसे यही कहूंगी कि इनसे अच्छे टीचर्स आपको नहीं मिले, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हर ऑड सिचुएशन में अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन हम सोसाइटी से भी करते हैं कि प्लीज एक्सेप्ट, उनके पेरेंट्स को एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें अपने ग्रुप में बुलाइए। थोड़ा एक आपको भी कहीं सुकून मिलेगा आप जब किसी को कुछ खुशी देते हैं। Of course, yes, I राइट। agree. हाँ, सो वो चीजें लैग हो रही है जो कि अवेयरनेस हमको सोसाइटी में करनी है। So actually, yes, I completely agree. While you were talking, I was also thinking that when you were speaking, both of you, in fact, not just you, Rakhi ji, but both of you, itni passion se you all both were talking about the whole subject. And that's what reminded me of one of the quotes that just hit me, was that when you're doing something that you love, you are never tired. No, never tired. You're never tired. So to this what is you what said, I'm telling. I get up at 5:30 and till 12 I'm working without any break. Right. I remember, since मुझे याद नहीं कि 25 साल में मैं कभी दोपहर को सोई हूँ। Right? See, that speaks a lot about how much you love your work. Yes. ये बहुत बड़ी बात है. And then I'll come to the question about, you also mentioned that awareness की बहुत जरूरत है. Before I come to that, I also want to know, how do you start your day? Because अभी आपने बोला आप सुबह 5 बजे उठते हो. So how does your day look like, when you have these sessions, or you have classes, connect with these children? So how do you manage your whole day? I just want to know यार छोटा सा रूटीन अगर आप शेयर कर सको तो। शायद बोरिंग लगे आप लोगों को, और या किसी को लगे वाह इतना करके भी इतना ही कर, मतलब सी आई गेट अप अर्ली, आई ट्राई टू गेट अप अर्ली। अगर उससे जल्दी भी हो जाता है तो या 5 and 6 लाइक दैट, समटाइम्स 4:30 आल्सो। सो द फर्स्ट रूटीन इज अपनी फैमिली की केयर, उनका खाना सबसे पहले रेडी। आई कुक फॉर माई चिल्ड्रन, आई कुक फॉर माई फैमिली, माई सेल्फ। मतलब मैं चाहती हूँ कि जब तक कभी बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए या हस्बैंड को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि काम कर रही है तो हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं या हमें मतलब अटेंशन नहीं मिल रहा है। राइट। और उसी हिसाब से बच्चे भी बहुत अच्छे से, फैमिली भी एडजस्ट हो गई है। सी काफी पेरेंट्स के साथ होता है कि मम्मी ऑलवेज थाली रेडी रखती है, खाना रेडी रखती है, बच्चों की एवरीथिंग रेडी, बट बच्चे मेरे बचपन से वही चीजें देख रहे हैं कि मम्मा इज बिजी बिजी बिजी। बच्चे भी अपने आप वैसे ही एडजस्ट हो गए हैं, दे विल मैनेज एवरीथिंग बाय। और मुझे लग रहा है शायद एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज कि बहुत जल्दी वो इंडिपेंडेंट हो गए। Absolutely. And they are very sensitive towards the society. कुछ भी अगर होता है तभी बच्चे ही बोलेंगे, नो मम्मा यू जस्ट फिनिश योर वर्क, विल मैनेज। Right. So this is how the small things, parent family तो सफर करती ही है कहीं ना कहीं, but they are also very happy and I am thanks to them also, to husband, to kids, कि हमेशा ही उन्होंने मेरे साथ एडजस्ट किया है, ऑलवेज एडजस्ट किया है, लाइक दैट। सो रूटीन मेरा जो आपने पूछा कि सुबह इस तरह से मैं स्टार्ट करती हूँ, खाना है, देन थोड़ा अगर टाइम मिलता है तो अपने लिए कुछ वॉक या एक्सरसाइज कहीं जा सकती हूँ तो ठीक है, कई बार मिस भी करती हूँ, चीजें मिस हो जाती है। देन सुबह जो हमारी रूटीन मेरा 9 o'clock स्टार्ट होता है। घर पे भी करंट फाउंडेशन मैंने अभी 3 years पहले ही फॉर्म किया, उसके रीजन बताऊंगी मैं उसके पीछे कि व्हाई आई फॉर्म दिस एनजीओ। बट 9 बजे मेरा रूटीन एज सच घर पे भी स्टार्ट हो जाता था, एंड 9 to 12 used to teach, फिर half an hour का 1 hour का ब्रेक लेके लंच टाइम, एंड अगेन आई यूज्ड टू स्टार्ट एट 1:30, बैक टू बैक सेशंस होते रहते हैं। बच्चे आते हैं और उसके बाद अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को, करण को और इनको मैं रात को
10 बजे के बाद भी कई बार पढ़ाती हूँ. They are supporting me till 12:30, 1 o'clock. They adjust with me. So I'm very lucky कि सब लोग घर के फैमिली मेंबर्स मेरे साथ एडजस्ट करें, इसलिए शायद मैं इस जर्नी को थोड़ा स्मूथली विद कंपेयर टू अदर्स कर पा रही हूँ. Right. तो थैंक्स टू देम, थैंक्स टू माय किड्स, थैंक्स टू पुनीत कि वो लोग हमेशा सपोर्टिव रहे हैं इस मामले में. टाइम के साथ उन्होंने हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया है, हमेशा ही किया है. एंड It's like yes. No, I was just visualizing आपने जो बताया ना, so in my head it was more like, maybe you are the lead singer of the band, but Yes. the band Thank will you. never be complete without the full orchestra. Yes. So you have the yes. full orchestra with you in the And I'm house. very lucky. I'm to very support you. lucky कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली जिन्होंने सपोर्ट किया इस तरह से, मुझे ऑलवेज सपोर्ट किया, कॉम्प्रोमाइजेस करके भी. दे नेवर कंप्लेन, दे नेवर कंप्लेन. ऑलवेज की प्रायोरिटी, उन्होंने भी प्रायोरिटी इसी को दी कि मम्मा यू कंटिन्यू विद, विल मैनेज Right. विद द Right. थिंग्स लाइक दैट. और फिर That's so करण को beautiful. पढ़ाना, डॉटर को पढ़ाना. मेरी दूसरी डॉटर है, शी इज 10 years younger to Karan. Karan is Right. 25, Karan daughter is 15. Okay. Okay. like that. Nice. तो करण को मैंने पढ़ाया ओपन स्कूलिंग से, बिकॉज आफ्टर एक्सीडेंट ही वाज नॉट एबल टू गो टू द रेगुलर स्कूलिंग, was not able to do that. And then again it motivated me and I started teaching children, those who were dropouts या जो नहीं पढ़ पा रहे थे. तो ये मैंने ओपन स्कूलिंग की अवेयरनेस बहुत की. एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग देम, और उनको ओपन स्कूल से एग्जाम्स दिलवाती थी मैं. करण को भी मैं किसी तरह से 22 की एज तक मैंने 12th क्लियर कराया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से. तो he was 22 में भी उससे अपना 12th क्लियर किया. देन ही गॉट अ जॉब इन MNC. Lovely. So nice. This is what everything started. So beautiful. Thank you. Thank Thank you you. so much for sharing your story and inspiring words as well. I just have one last question for you, Rakhi ji. Yes. So we have a lot of audience who are watching us today, listening to us, listening to Yes. your inspiring story. Yes. Any message that you would like to pass to the youth, to the people who are watching, Yes. on how can they contribute to the society, to the Yes. especially able people who really need our support and empathy? Yes. Any few tips or best practices that you would like to share? It's definitely, I would say, we see we have a community, right? Parents and including special needs children. We don't need your sympathy. We need empathy, right? Accept these children, our children, as the way they are. They're not going to hurt you, right? They're very soft-hearted. The thing is that उनको थोड़ा आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा समझने के लिए. तो एंड सेकेंड थिंग, द यूथ को मेरा एक बहुत बड़ा मैसेज है. जैसे मैंने करण फाउंडेशन फॉर्म किया बिकॉज चैरिटी बेस्ड बच्चे बहुत बढ़ने लग गए थे. मेरे पास कई पेरेंट्स आते थे कि वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड द फीस एंड ऑल दैट. सो देन आई स्टार्टेड टेकिंग देम ऑल्सो, आई स्टार्टेड गिविंग थेरेपीज टू देम ऑल्सो. एंड दिस मोटिवेटेड मी, क्योंकि मैं अकेले बेसिस पे कितना काम कर सकती थी, राइट? सो आई फॉर्म्ड करण फाउंडेशन एंड उसमें चैरिटी बेस्ड काम ही ज्यादा होता है. दोज हू कैन नॉट अफोर्ड देयर थेरेपीज, दे आर मोस्ट वेलकम. तो सोसाइटी को भी एक कंट्रीब्यूशन ही है. तो मैं और लोगों से भी बोलूंगी, प्लीज यूनाइट विद अस. इस तरह से छोटे छोटे काम कीजिए, कुछ तो कीजिए किसी एक बच्चे के लिए, किसी एक फैमिली के लिए. तो वो भी एक आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा. और अगर एक भी बच्चे की आप फेस पे या पेरेंट के फेस पे आप स्माइल ला सकते हैं एक महीने में, एक साल में, इस बात को समझ के कर सकते हैं, तो वो एक आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को. और यूथ के लिए मैं आपको बहुत प्लस पॉइंट बोलना चाहूंगी कि आज का जो यूथ है, दे आर वेरी सेंसिटिव. दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड. करेक्ट? बहुत सारे यूथ आते हैं कि मैम हम वॉलंटियरी बेसिस पे आपको हेल्प करना चाहते हैं, ये कैसे कर सकते हैं. सो यूथ इज नाउ हमारे लिए कभी वो एक बहुत बड़ा लाइट हाउस है कि उनको हम ट्रेन कर सकते हैं. दे आर वेरी सेंसिटिव, दे अंडरस्टैंड, दे वांट टू अंडरस्टैंड. So उनको एक guidance चाहिए. We are always there for them to teach them, to give them the training कि किस तरह से awareness करनी है, क्या करना है. And we are ready to accept कि आप आइए, please हमसे जुड़िए, because एक अकेला थक जाएगा, right? साथ ही हाथ बढ़ाना. तो it's like that. So we want people to join us कि वापस सोसाइटी को थोड़ा तो दीजिए. अपने लिए तो सब जीते हैं. So beautiful. It's so beautiful. Yes, so all the listeners and viewers, we urge you to reach out to Karan Foundation as well. You might want to explore more what kind of amazing work that they are doing. At the same time, I think
just being there to someone, just to listen to them in itself is Yes. a big contribution to begin with. Yes. And I think whatever we can do, we must do Yes. in Please order to join be us, a join hands supportive here. community. और एक Yes. बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गई, मैंने 22 years तक एक 10/12 के रूम में ही ये सर्विस इतने बच्चों को दी है. Every year I used to take challenge to teach 20 to 25 children, and now I have made this setup because अब बच्चे बढ़ रहे हैं, so I need a Right. more space. So now I've stepped out. So just join us. We are Thank you always so much. happy. Thank you so much for inviting us. Thank you, Rakhi ji. Thank you Thank so you. much. Thank you, Thank you, Puneet ji. Rakhi. Thank you very much. Thank Yes. you. Thank you, everyone. Darshana. Thank you, Vishal. Thank you. Thank you, Rakhi and And Puniji, thank for you. your time and Yes. sharing your thoughts. And you are doing amazing work for the society, for the community. And as you rightly said, they don't require sympathy; they require Yes, empathy. It's empathy, the most yes. important thing, not the Yes. sympathy. Yes, yes, yes. Yes. And Thank thank you you, so Mitti, much. for wonderfully moderating the power couple, rather I can say, and managing the session wholly for the youth, for the Thank you so woman, for the Fempreneur. And see you all in the physical event Fempreneur 2023 at Ahmedabad on 19th of March. Yes. So thank Yes. you, Rakhi ji, Puneet ji again, and thank you, Thank you, Mitti. Fempreneur, And Thank you. for Thank you, giving us this everyone. opportunity watching all the to. viewers for this Thank you, powerful Vishal. power Thank couple you. Saturday talk. Thank you, Vishal. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye bye. Jai Hind. Bye-bye. Have a nice day.